Hello dear students, welcome to yet another session on personality development. I'm sure that you must be really working on your personalities और बहुत अच्छे impressions आप create कर रहे होगे दूसरों के ऊपर. But just creating impressions is not enough. You have to learn how to manage your impressions. Create positive impressions and manage them. That is our topic for the day, which is on impression management. This topic is very, very important. You can collect a lot of material from journals, from various magazines, from the internet, but it is a fairly new topic. Therefore, sometimes material is not available and sometimes you are a little bit lazy to work on new topics. So I will give you a fantastic idea to work on this topic, because this topic is very important. If you want to create a good life for yourself, you need to create a very good impression. So in a very practical way, you can go on working on this particular topic. I will give you a very, very commonplace example. All the women folk sitting out there, आप बिंदी तो लगाते होगे? In the Indian culture, bindi is a very, very beautiful and a nice thing. Now, if you put the bindi slightly over here and look at the mirror, तो आपको क्या दिखेगा? आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. अगर आपकी बिंदी सेंटर में है, आप मिरर देखते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है and you go out into the world and face the world with confidence. अगर ये यहाँ पे है, तो और आप मिरर में देखते हो, आपको कैसा लगेगा? आपकी आंखों को वो खटकेगा. और करेक्शन वर्क आप कहाँ करोगे? अपने फेस के ऊपर करेक्शन वर्क करोगे और बिंदी सेंटर में लगाओगे. मिरर में तो करेक्शन वर्क नहीं करोगे ना आप. सिमिलरली, द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर एंड वी आर कॉन्स्टेंटली एंड every day, every moment, we are creating impressions on the other people. You must remember that everything you do, everything you say is constantly creating an impression on the other people. If you create a positive impression, आपको positive feedback मिलता है लोगों से. If you create a negative impression, आपको negative feedback मिलता है लोगों से. और correction work आपको कहाँ करना है? मिरर के ऊपर नहीं करना है, अपने ऊपर करेक्शन वर्क करना है. इसको बोलते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट. ना कोई किताबों की जरूरत है, ना कोई रेफरेंस की जरूरत है. इन योर डेली लाइफ, in your everyday interactions from people, you will constantly keep getting feedback from everyone. Negative feedback जहाँ पे मिला आपको, you have to ask yourself, मुझे कहाँ improve होना है, और अपने ऊपर काम start कर दो. This is the simplest way to manage your impressions. Isn't it interesting? All the same, I will give you some pointers on how to manage your impressions and create positive impressions. The first point, very simple point, you can make a note of it. A professional approach creates a positive impression and an unprofessional approach creates a negative impression. It is very, very simple. People have a lot of desire. थोड़ा सा पैसा हाथ में आ जाता है. They want to start something new. कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहता है, कोई बुटीक स्टार्ट करना चाहता है. दैट इज वेरी गुड. इट इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस. इट इज अ साइन दैट द पर्सन इज वेरी, वेरी क्रिएटिव. पर आप जो भी स्टार्ट करते हो उसको प्रोफेशनली करो. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डू. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू डू इट. दैट इज द मैजिक एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन. स्टार्ट करने को तो बहुत सी चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, but how you are doing it, that is very, very important. For example, I am a visiting faculty. I visit various institutes. Some are run professionally and some are run unprofessionally. In दोनों में difference क्या है? I will give you a simple example. Just day before yesterday, I had the timing of 12 to 2 as a class timing, which was shifted to early in the morning, 9 o'clock. Promptly, I reach at 8:45 in the institute. The institute was not open, and
The timing went on to 9, then 9:30, 9:45, 10 o'clock. Students wait कर रहे हैं, faculty wait कर रही है. क्लास तो हुई उसके बाद, लेकिन क्या डैमेज हो गया? इम्प्रेशन. टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं है तो इम्प्रेशन खराब हो जाता है. The institute is labeled as unprofessional. So it is not important what you are doing. How you are doing is very, very important. Punctuality, time management is very important. And if people don't abide by all these things, it creates a very, very bad impression. Not only institutes, let us say restaurant or hotel, जहां आप खाना खाने जाते हो. On the same street, you have a restaurant X and you have a restaurant Y. Why do people run to restaurant Y? खाना दोनों जगह अच्छे से सर्व होता है, लेकिन Y में ऐसी क्या खासियत है कि लोग वहां जाते हैं, आते हैं, बोलते हैं हमने बहुत एंजॉय किया, खाना बहुत अच्छा था. X में भी खाना अच्छा होता है. Service is not good, service is not with a smile, and the sheets are unclean, the ambience is not good, plants are dried, paintings are not properly done. Nothing is done very nicely. मन से कुछ नहीं होता है. And similarly, otherwise, in the restaurant, why everything is beautiful. People are serving with a smile. Ambience is very good. वहाँ the whole experience is very good, and people feel very happy when they come back. So these small, small things, service with a smile is a very, very small thing, but it creates a very good impression. So for creating a good impression as far as your professional life is concerned, two things are very important. One is a professional approach, and secondly, whatever you do it with your heart. Don't just ऊपर से आपने कुछ भी स्टार्ट कर लिया, आप कुछ भी कर रहे हो. रन तो करेगा, थोड़े टाइम वो चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा. So do it with your heart and soul. Definitely the impression will be good. The second point that I would like to speak about is money-centric approach. Money-centric approach spoils the impression. Well, some people when they are talking, when they are thinking, there is only money which comes out. उनकी बातों में खाली पैसा झलकता है. Well, money is very, very important, but it is not the be-all and end-all of existence. Money is for us. We are not for money. If you are constantly talking about money all the time, आप सोचिए क्या impression पड़ेगा लोगों के ऊपर. Money is the bottom line, पर इतना बात मत करो उसके बारे में. Otherwise, it spoils the impression completely, whether it is your professional life or whether it is your personal life. Money definitely is the bottom line, but money is not everything. Let me give you an example. For example, if you go for an interview, आपने वो सेशन देखा होगा, तैयारी करी होगी इंटरव्यू फेस करने की. You have worn a very nice dress and neat and clean. Preparation बहुत अच्छी करी है, अपना resume लिया है, अपने papers लिए हैं, हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आंसर किया है आपने. आपका इम्प्रेशन जो पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, वेरी नाइस इम्प्रेशन, एंड ही इज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू टिक मार्क कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है. एंड टुवर्ड्स द एंड, what is it that spoils the impression? You ask the interviewer, sir, but salary, if you're not giving more than 25,000, I'm not really ready to work because, this is very, very important. Bas, impression kharab ho gaya na. If it is a good company and definitely you are a good candidate, you are willing to put in work, so you will get the money. Where is the money going to run away? It is not going to run away anywhere. But आपने वो पूछ के, वो बोल के इम्प्रेशन खराब कर दिया. So money, salary is a very, very subtle kind of a very important issue, and उसको बोल के आप अपना इम्प्रेशन खराब मत करो. That is very important. It has to be handled very delicately. वो पूछेंगे ना आपसे. At that point of time, you can answer. And initially, when it is your first job, definitely your concentration should not be on money. It should be on the learning experience. Okay, you must remember that talking about money
spoils the impression, not only in your professional life, in your personal life also. Let us take the case of Jyoti, who was an educated person having a very good job, and she fell into a relationship with Rakesh, who was still studying, who was not working. And she thought that Rakesh was a very nice person and very happy she was with the relationship. Introduce करने वाली थी राकेश को अपने family members से that I have got a nice person and I want to spend my life with this person. He is a very good boy, a thorough gentleman. Until the time Rakesh started asking Jyoti for money. First it was 2,000, then 5,000, then 10,000. And the demands went on increasing. After that, Jyoti got really frustrated and she tried to find out about Rakesh's background. उसको पता चला वो सही आदमी नहीं था. Well, in this case, Rakesh was a negative person. तो ठीक है, but there are a lot of positive people also who spoil relationships completely, talking about money, bringing money in between the relationship. तो money is an issue which has to be handled very carefully, whether it is your professional life and whether it is your personal life. So just keep that in mind and do not spoil your impressions talking too much about money. Okay? Handle it with care, but don't talk too much about it. Next one, change of impressions. कई बार ऐसा होता है कि labels लग जाते हैं लोगों के ऊपर, personality type के ऊपर, and people are very comfortable with the label and they say हम change कैसे हो सकते हैं. शुरू से कहा जा रहा है I am a very lazy person. Okay, I am a lazy person. And you don't mind being lazy for the rest of your life. Arey, you do have a choice. You must remember that all of us have a choice. If we have been labeled as a lazy person, we can put in effort and change that impression from a lazy to a hardworking person. Or if you have been labeled as a dull and a boring person, और आप ये impression change करना चाहते हो, तो अपना effort डाल के आप interesting बन सकते हो. Effort डालना है, मेहनत करनी है, and definitely you can change the impression. Who says that you cannot change the impression? That is the wonderful thing about the human personality. That if you desire and if you put in work, you can make anything you can do anything with yourself. Impression एक ऐसी चीज है जो आप खुद बनाते हो और खुद change कर सकते हो. Isn't it wonderful? Let us take the case of Adarsh Saxena, who was from a nice family, intelligent boy, but थोड़ा सा lazy था और थोड़ा सा spoiled था. सुबह देर से उठना, ज्यादा काम नहीं करना और कोई डायरेक्शन नहीं, फोकस नहीं. भगवान ने बहुत कुछ दिया, वेरी नाइस फैमिली, लेकिन वो यूज नहीं करता था अपनी इंटेलिजेंस को. सो वंस व्हेन ही वाज स्लीपिंग टिल 9 o'clock, 10 o'clock, ही हर्ड हिज मदर टेल हिज फादर, इसको बिजनेस में आप क्यों नहीं डालते हो? इंटेलिजेंस तो है ना, कम से कम इसको डायरेक्शन मिलेगा, काम करेगा. What his father said, that really hurt him. उसके फादर ने क्या बोला? It is a very common statement. कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा. उसके फादर ने बोला, ये तो गधा है, ये क्या कर सकेगा लाइफ में? कुछ नहीं कर सकेगा, जाने दो, बिजनेस में नहीं इंक्लूड करना है. आदर्श सक्सेना heard that and that statement really pinched him. बहुत बुरा लगा उसको, क्योंकि एक्चुअली वो गधा तो था नहीं. He was not a good for nothing creature. He was an intelligent boy. पर उसने impression ऐसा डाला हुआ था लोगों के ऊपर अपनी हैबिट से कि वो good for nothing है. जब उसने वो स्टेटमेंट सुना, उसने कुछ बोला नहीं अपने फादर और मदर को. सिंपली उसने अपने माइंड में रिजॉल्व किया कि आई एम गोइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई एम नॉट अ गुड फॉर नथिंग क्रीचर. फ्रॉम द नेक्स्ट डे हिज हैबिट स्टार्टेड चेंजिंग. He started attending the college regularly, started getting up early, started exercising. उसने सब अपना किया, पढ़ाई, MBA अच्छे मार्क्स से किया. After that he started a small business of his own
of Lucknowi chicken cloth, and today he is a very, very successful business person. And today his father is patting him on the back and saying, ये देखो मेरा बेटा उसने MBA किया है और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. फ्रॉम ये तो गधा है टू आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, ये चेंज कैसे हुआ? ये चेंज तब हुआ when the realization happened to Adarsh Saxena, and when he put in the effort, when he changed his habits, ये चेंज अपने आप हो गया. So you have to know कि अगर आप चाहते हो तो आप अपने इम्प्रेशंस चेंज कर सकते हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और बहुत बहुत मेहनत चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो. So you must keep that in mind. Next one, the next point which I would like to talk about is the sentence, God has been very kind to this person. ये सेंटेंस आपने सुना होगा, God has been very kind. अल्लाह इस पे बहुत मेहरबान है. Isn't it? जब हम, when we meet a person who has everything in life, good health, good house, good relationships, money, देख के लगता है कि ये तो बंदा बहुत लकी है, अल्लाह इस पे बहुत मेहरबान है. गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू दिस पर्सन. इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? इज इट दैट गॉड इज वेरी पार्शियल? टीचर्स पार्शियल हो सकती हैं, लेकिन भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है अपने बंदों में. गॉड इज द सेम. देन हाउ कम one person is so successful and one person is not very successful? God is not partial. But when you see a person successful, what you have to see is the mehnat which he has put in, the desire, the passion, the commitment जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ है. ये इम्प्रेशन आप छोड़ दो कि भगवान इस पे ज्यादा मेहरबान है, इसीलिए ये इस पोजीशन पे है. अ पर्सन हु इज इन अ ग्रेट पोजीशन टुडे, ही हैज वर्कड फॉर दैट पोजीशन. ये आपको याद रखना है. डेफिनेटली आई एम नॉट डिनाइंग दैट गॉड इज डेफिनेटली देयर. विदाउट द सपोर्ट ऑफ गॉड नथिंग कैन हैपन. एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है. बट डू यू नो दैट गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. आप कुछ काम नहीं करोगे, कुछ मेहनत नहीं करोगे, कोई दिशा नहीं है आपकी लाइफ में, और सिर्फ वेट करोगे हाउ गॉड इज गोइंग टू बी काइंड टू यू, देन गॉड विल नेवर बी काइंड टू यू. यू हैव टू वर्क. You have to work very, very hard. You have to have lot of commitment, and then definitely the blessings of God are definitely going to be there with you. Without work, nothing can happen. So just keep that in mind. ये impressions नहीं होने चाहिए आपके लाइफ में कि गॉड है, अल्लाह उस पे बहुत मेहरबान है. गॉड विल बी मेहरबान ऑन यू ऑल्सो वन डे, लेकिन विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कमिटमेंट, पैशन, डिजायर, एक्सेलेंस, ये सब क्वालिटीज अपने पर्सनैलिटी में आप जेनरेट करो, देन यू सी हाउ गॉड इज गोइंग टू बिकम योर फ्रेंड. नेक्स्ट वन, अ स्लाइटली सीरियस टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and very real. That is on death. After death, what do we leave? After death, we leave only our impressions. No man is ever remembered for how much property he made or for how nice he looked. People, when they go away from this world, are remembered for the impressions that they leave in this world. For what you did for others, what you gave to the others, how kind you were, what is the difference you made in the world. People are remembered for that. If you constantly keep the reality of death in mind, then your perception of life itself changes. You have to remember, you have to know, and you have to think about how you would like people to remember you when you go away from this world. Stop and think about it. Are your actions in alignment with this thought? क्या आपको ऐसा लगता है, आपको खुशी होगी, लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत लेजी था,
ये तो बहुत तंग करता था, ये तो बहुत कंजूस था, आपको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली नॉट. What would you like people to talk about you? He was a very kind person. He was a very helpful person. He was a very intelligent person. He was very self-reliant. He was very committed. He was very passionate. Isn't it? तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास. We are there in this world for 50 years, 60 years, 70 years, 80. If you are lucky, 90, 100 years. So keep cultivating positive qualities in your personality so that when you go away from this world, people should talk good things about you and you leave good impressions in this world. That is very, very important. Next point, again a slightly different point, but again very important. Prayerize. शुरू से कहा जाता है pray to God, but how you pray is very, very important. अगरबत्ती जलाते हो आप, धूप बत्ती जलाते हो, फूल चढ़ाते हो भगवान पे, भगवान भी खुश होता है. स्तुति किसको नहीं अच्छी लगती, भगवान को भी अच्छी लगती है. बट यू आर प्रेइंग ऑन वन साइड एंड इनसाइड योर हार्ट यू आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, हेट्रेड, जेलेसी, एंगर, उसने मुझे इंसल्ट किया, मुझे उसको ये प्रूव करना है. इतनी नेगेटिविटी आपके अंदर है तो उस पूजा का क्या मतलब? उस पूजा से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है. यू आर क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन ऑन गॉड. गॉड नोज एवरीथिंग. बाहरी पूजा से कुछ फायदा नहीं होने वाला है until and unless you try to remove all the negative feelings from within yourself. That is the actual prayer, isn't it? Try every negative feeling, try and convert it into positive. If you are talking negative about people, if you are having so much of hatred and anger within yourself, even in your thoughts, God knows all that. Don't try to fool him. Okay? So it is very, very important to have clear and clean emotions within your personality. It is not easy, but you can go on trying to do that. That is the actual prayer. Let us go on to something more professional. That is being a good team person. Being a good team person is very, very important today. Because it is important that a person should be effective. You might be very, very efficient, but if you are not able to give good results, you will not create a good impression on the other people. Pankaj Kulkarni was one such person. बहुत ही इंटेलिजेंट था, अच्छे कॉलेज से था, पर उसको जब MBA में एडमिशन मिला एंड व्हेन दे वर गिवन ग्रुप एक्सरसाइजेस, वो he used to shy away. He used to tell his professors, give me work, I will do the work, but give me individual work. Don't tell me to work in a team. Because of this attitude of his, he did not create a good impression amidst his professors and college students. And he did not do his MBA very, very well. So it is important that you should be able to work in a team. Today, people who are successful are people who are good team players. Whether it is your personal life or whether it is your professional life, you have to carry people along with you. Only then you will be effective. And effective people and team players are the people who create very good impressions on the others. Bosses want results. They are not very keen on knowing how high your IQ is. या आपकी एफिशिएंसी लेवल कितनी हाई है. आपकी एफिशिएंसी लेवल हाई है और आप टीम में काम नहीं कर सकते हो तो रिजल्ट नहीं आएगा. आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत ग्रेट हो और बहुत स्मार्ट हो, लेकिन फैमिली को आपने निग्लेक्ट किया है तो रिजल्ट नहीं आएगा. एवरीथिंग इज अ टीम. सो यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर. Only then you will be effective, and only then your impression in your organization, in your society, in your neighborhood, everywhere will be really good. People will talk good about you. Carry people along with you. Don't isolate yourself. Okay? So being a good team player creates a good impression. Remember that forever. Next one, boasting and bragging about oneself creates obviously a bad impression. It creates a negative impression.
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत होती है अपने बारे में। मैंने ये किया था और मार्केटिंग में कोर्स किया है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है पास्ट में, इट हैज गॉन, नाउ व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग। इसका क्या फायदा फिर? पास्ट इज गॉन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पास्ट इज अ कैंसल्ड चेक, future is a promissory note, present is what we have. People are seeing you as what you are in the present. Past में you might be having lot of feathers in your cap, but उसका आज बहुत ज्यादा वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आप आज क्या कर रहे हो। So do not boast and brag about your achievements and today you are not doing anything. इसका कोई मतलब नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस बख्शी के केस में यही हो रहा है। मिसेस बख्शी इज वर्किंग ओवर टाइम बिकॉज शी इज हैविंग 2 टीनेज चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ। ये इन्हीं की कहानी नहीं है, देर आर सो मेनी फैमिलीज हु आर गोइंग थ्रू दिस। मिस्टर बख्शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग टुडे, बट ही इज वेरी हैप्पी विद हिज पास्ट। उनका इम्प्रेशन अपने बारे में बहुत ऊंचा है, बट what are people talking about Mr. Bakshi? What is the impression he is having on his own wife? What is the impression that he is having on his own children? He does nothing the whole day, only talks about his past achievement, and he does his drinking and smoking and socializing. सारी बुरी आदतें हैं, पैसे खर्च करते हैं किसके? अपनी वाइफ के। और अपने आप को क्या समझते हैं? In Hindi there is a very nice word, 30 मार्खा समझते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। सो प्लीज डू नॉट बोस्ट एंड ब्रैग अबाउट योर सेल्फ। अगर आप बहुत ग्रेट हो और बहुत अच्छा काम करते हो, लोगों को ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा, अच्छा इंप्रेशन ऑटोमेटिकली पड़ेगा। बहुत ज्यादा बोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, उल्टा इंप्रेशन खराब हो जाता है। So do not boast and brag about your past achievements and concentrate on your work and concentrate on learning as of today, and don't bother about impression as far as creating positive impressions is concerned. If you are doing positive work, if you are doing good work, automatically लोगों को पता चलेगा, आपको उसमें announcement करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, हिंदी में एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट करेक्ट। वॉट यू बिलीव इन, वॉट यू स्टैंड फॉर, यू शुड बी अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर डे और नाइट यू शुड बी अ लिविंग एग्जाम्पल। आप एक चीज बात करते हो और एक चीज करते हो तो सूनर और लेटर लोगों को पता चल जाएगा और इंप्रेशन खराब हो जाएगा। दैट इज सो मेनी केसेस वी सी। Minnie Mathur was one such person who had opened a boutique, very nice boutique. She was actually in the teaching line, but she used to come very stylishly. And people used to say कि आपके अंदर इतना स्टाइल है, आपको जानकारी है, अच्छी अच्छी चीजें कहाँ मिलती हैं, और आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है, आप एक बुटीक क्यों नहीं खोलते हो? तो उन्होंने एक अच्छा सा बुटीक खोला जहाँ पे शी यूज्ड टू टेक स्टिचिंग ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग। उसका नाम रखा नजाकत स्टाइल। She decorated it very nicely and very softly she used to speak to her clients, and clients used to feel very nice coming to that particular boutique कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ, बहुत शांति मिलती है, अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, एक वाटर बॉडी थी वहाँ पे, and there was lot of style in whatever she was doing. But one day what happened was that कुछ visiting cards वाला आया उनके पास और कुछ गलत बना दिया था उसने, एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग लाइक एनीथिंग टू दैट पर्सन। ये कैसे बनाया और ये गलती कैसे हो गई, ये कोई तरीका है बनाने का, ये फॉन्ट साइज गलत है और इसका बैकग्राउंड गलत है। बस जो क्लाइंट्स वहां बैठे थे उनके ऊपर इम्प्रेशन जो आज तक पड़ा था नजाकत का, वो खत्म हो गया ना। अगर आप बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहे हो
और एक साइड में आप ऐसे चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, तो इम्प्रेशन कैसे रहेगा क्लाइंट्स के ऊपर? वो क्लाइंट्स ने बोला अभी टाइम है यहाँ से जाने का, एंड दे नेवर केम बैक टू द बुटीक. So, what I'm trying to say, whatever field you are into, if you're talking of positivity, if you're talking of confidence, if you're talking of kindness, you must actually live it. It is not that you're talking of one thing and you're doing another thing. उससे इम्प्रेशन खराब हो जाएगा. बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, द फादर्स आर टेलिंग द सन्स, बेटा स्मोकिंग बहुत खराब आदत है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड ही इज स्मोकिंग हिमसेल्फ. सो दैट इज नॉट करेक्ट. आप जो whatever you stand for, see that you are living that particular life. Otherwise, लोगों के ऊपर impression खराब हो जाता है. If parents are preaching something to their children, then they must see to it that they are doing it themselves. If you are teaching something to your younger brother or sister, first see to it that you are doing it yourself. पहले खुद करो, फिर लोगों को एडवाइस करो, फिर लोगों को टीच करो. बिकॉज टीचिंग में तो हम लोग सब बहुत माहिर हैं. एवरीबडी लाइक्स टू टीच, एवरीबडी लाइक्स टू एडवाइस. नॉलेज तो सबको बहुत भरपूर है, लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है. तो it is a very nice advice that I am giving to you, that first practice what you preach, because if people see that you are not practicing what you are preaching, impression खराब हो जाता है. Lecturers who are taking seminars and workshops, if they are talking about positive thinking, if they are taking workshops on positivity, they themselves should be a living example of positive thinking and positivity. ऐसा नहीं होना चाहिए that they are negative people and they are talking about positive thinking. इससे impression खराब हो जाएगा. So we all can try. आप जो भी advice करते हो, जो भी teach करते हो, जो भी आपके values हैं और बोलते हो, whatever you stand for, you should practice it first yourself. That is very, very important. Next one is radiate positivity. It is very important that you should radiate positivity. That will create a very, very good impression on the other people. Negativity repels people. Positivity attracts people. That is a very, very simple equation. So, okay, the next point that I would like to speak about is stress. Stress, how to manage your stress. Now, stress, tension, anxiety, आज की दुनिया में किसको stress नहीं है? So many people are stressed out. Almost everyone is stressed out, isn't it? It could be because of your health, it could be because of the money aspect, it could be because of career, it could be because of love affair. So many things are there. इसका मतलब आप सिर्फ उसी के बारे में बात करते रहोगे लोगों से, मुझे तो बड़ा टेंशन है, मुझे तो इसका बड़ा टेंशन है, मुझे तो उसका बड़ा टेंशन है. क्या आपको लगता है दूसरे लोग आपके टेंशन में इंटरेस्टेड है? क्या आपको लगता है दूसरे लोग आपके स्ट्रेस में इंटरेस्टेड हैं? नॉट एट ऑल. आप जब इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हो, द अदर पर्सन विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ. ही विल से दिस पर्सन इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स ओनली, और वो इम्प्रेशन आपका खराब हो जाएगा. तो जो हम बोलते हैं पॉजिटिव लोग हैं, ऐसा नहीं है उनको स्ट्रेस नहीं है. दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ, बट दे हैव लर्न्ड हाउ टू manage that stress. So it is very, very important that you should learn how to manage your stress. Don't go on talking like a crybaby to everyone regarding your stress problems. Learn how to manage your stress and talk positively to the other people. Okay, dear students, I would now like to wind up this session on impression management. I hope you have been able to gather something from this particular session, and now please make a note of the assignments. Please jot it down properly, the questions that I would like to give you. Yes, you can do a lot of research on this particular topic. I have given you very few points. This topic is very, very important. You can do a lot of research yourself on this topic, because the simple fact is that create good impressions and create a good life for yourself, and create bad impressions and create a bad life for yourself. You can spoil your life completely
even if you're an intelligent person, but if you have not created a good impression, आपकी life spoil हो जाएगी. तो इस topic के ऊपर थोड़ा importance दीजिए. Write down the question, who is the celebrity who has most impressed you as a growing child? Write down the life sketch of that person. Next one, how can you create a good impression when you go for an interview? Write down your essay keeping in mind 15 to 20 points. Elaborate on those points. Next one, how can you create a good impression or impact while giving an official corporate presentation? Give 15 to 20 points for the same. Elaborate on those points. Next, how can you create a good impression on your family members by following the family etiquettes? Refer to the lecture on family etiquettes. Next, write down a few points on how you can win friends and influence people. Write down at least 15 to 20 points for the same. You can refer to the book How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Okay, dear students, I would now like to wind up this topic on impression management, and I hope you will be able to make good impressions on the others. कई बार लोग बोलते हैं कि how can I create a good impression? हमारे पास तो बहुत कुछ है ही नहीं, हम अच्छा impression कैसे create कर सकते हैं? I am sure you would have heard of this quote. If you have not heard, hear it now. All good things in life are actually free of cost. Find it difficult to believe? Listen to this list. A smile, friendship, warm words, love and affection, looking nice, feeling good, feeling positive, kind deeds, helping others, giving others, service to the society, selfless work, counseling, giving others a reason to smile. Isn't it wonderful? इन सब चीजों के लिए आपको ना पैसों की जरूरत है, ना चीजों की जरूरत है. ये सब चीजें आपके पास है विद इन योर ओन पर्सनैलिटी. अपनी पर्सनैलिटी में से निकालिए इनको बाहर और अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इंक्लूड करिए. देखिए आपके इम्प्रेशंस कितने अच्छे पड़ते हैं लोगों के ऊपर. जस्ट लाइक एवरी थ्रेड ऑफ गोल्ड is very, very precious, so also every moment in life is very, very precious. Use each and every moment in your life to develop your personality, to work on your personality, make your life better and make the other people's lives better. Automatically ही लोगों के ऊपर अच्छा impression पड़ेगा. So dear students, wish you all the best for your exams. Lots and lots of success in life and happy impression management. Thank you.